Assalamu alaikum students. Welcome to my biology lecture. Today we will start a very important chapter for class 10th, that is digestive system. In this lecture we will learn what is digestion, why digestion is important, and parts of digestive system. So do subscribe my channel Biology Inside Classroom, in which you will get the easiest version of the complex topics. So let's begin. So, the first question that arises in mind is why there is a need for a digestive system in a human body. So, the answer is our body needs energy to maintain life processes. In easy way, that our body requires that energy to maintain the daily life processes like walking, like studying, like sleeping, and etc. For these processes, our body needs energy. So, energy कहाँ से मिलती है? That energy comes from metabolism of food that we eat. For that, the food need to be digested. So, जो हम खुराक या हम खाना खाते हैं वो हमारे जिस्म के अंदर जाके मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म से एक इजी फॉर्म में या सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है. Our food consists of large molecules of carbohydrates, proteins and fats. हमारे खुराक के अंदर या खाने के अंदर ऐसे बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो कि खुद ब खुद आपकी ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो सकते एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए. तो उनको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है ताकि वो हमारे ब्लड सिस्टम के अंदर आराम से एंटर हो सकें. ठीक है. सो digestive system helps in breaking down these large molecules into smaller molecules so that they can easily enter in our bloodstream. So that's why the digestive system is important in a human body to maintain daily life processes. So next, what is ingestion? Digestion, absorption, assimilation and egestion. These are very basic and important parts of digestion. So, first of all, you can see a figure here. We will explain it later. Starting off with ingestion. Ingestion is a very simple process. Taking in of the food is called ingestion. यानी कि जब हम खुराक या खाना अपने मुंह में रखते हैं उसको हम ingestion कहते हैं. Next step is digestion. The breakdown of large food molecules into small soluble molecules by using enzymes is called digestion. Digestion का अमल हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है जैसे कि हमारे दांत और ज़ुबान मिल के खाने को चबाते हैं. हम उसका ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं of large food molecules into smaller molecules. और नेक्स्ट जो हमारी डाइजेशन होती है वो जाके होती है स्टमक के अंदर जो उस स्मॉल पार्टिकल्स को और भी स्मॉलर पार्टिकल्स या स्मॉलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है बाय सिक्रीटिंग डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन. सो आफ्टर the process of digestion in which large food molecules will be converted into small soluble molecules within the stomach. After that, the process of absorption starts. इसमें क्या होता है कि जो आपका digested food है जो stomach ने पेस्ट बना दिया है अब उसमें से important molecules जो कि बॉडी को चाहिए like carbohydrates, proteins, फैट्स वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. आफ्टर डाइजेशन द स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड पास फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्यूब इनटू द ब्लड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. ओके स्टूडेंट्स. ओके. सो नेक्स्ट प्रोसेस इज assimilation. So what is this? From blood
These small molecules are taken into cells and are used by the body for various purposes. This process is called assimilation. बेसिकली अगर इसको हम आसान तरीके से समझने की कोशिश करें, इसमें होता क्या है, when our body needs that small molecules के फ़र्ज़ करें हमारे ब्रेन को ज़रूरत है एनर्जी की, तो ब्रेन सेल्स ब्लड में से वो कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ब्रेन सेल्स. अगर हमारे हार्ट को ज़रूरत है एनर्जी की, तो हार्ट के जो सेल्स हैं जिनको हम कार्डियक सेल्स कहते हैं, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे फ्रॉम द ब्लड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. लास्ट वन इज इजेशन. By this process, the undigested part of the food removed out of the body. Simple is this कि जो खाना जिसमें से सारे important nutrients आपकी body ने absorb कर लिए हैं, अब जो उसका undigested part है like fibers या waste material है, वो आपकी body से excrete out हो जाता है. This process is called egestion. So, next is human alimentary canal. Okay, students, are you guys with me? Okay, very good. So, the organs that are involved in digestion makes the digestive system. These are called human alimentary canal. Okay, so there are two digestive system consist of two digestive organs. Okay, first one is alimentary canal and second is digestive glands. So, what are the parts of alimentary canal and what is alimentary canal? हम इसकी definition पढ़ते हैं. The alimentary canal is concerned with ingestion, digestion, absorption and egestion. Okay? So, what are the parts of alimentary canal? Look from the figure. Mouth, oral cavity, इसके behind होती है. Then pharynx, जो आपके गले में होता है. Then esophagus, your food pipe, also known as food pipe. Then your stomach, and then small intestine and large intestine. These are the parts of alimentary canal. Okay, so the second system that supports the digestive system is digestive glands. Okay, that secretes different kind of gastric juices that will help in the process of digestion. These are salivary glands present here in your mouth that produces saliva. Gastric glands present in your stomach that releases different enzymes to help the food to break down into smaller pieces. Then intestinal glands present in your intestines. Then there is liver, which secretes different kind of enzymes and digestive juices that help the process of digestion within the intestines. And last one is pancreas. Pancreas releases insulin, which is the most important hormone. Okay, so these are the glands which take part, very important role they play in the process of digestion. So in this video we have seen the alimentary canal and its parts. Okay, so in next video we will take a complete detailed version of alimentary canal and its part in detail. Okay, so do comment, share, subscribe and like. For PDF notes you can comment down. Thank you.